Welcome back, guys. Myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur, or we are here to today for discuss the taxability of the gift received from the relative or other than relative. This video is going to be very helpful for you if you received any gift from your relative or from your any person. And thank you for giving me the support for subscribing the channel and liking the video. Let's start the video. And first of all, we will discuss uh, three to four topics in which we will understand the taxability of gifts and as well as the what are the provisions which is mentioned under the Income Tax Act for the taxability, and gift planning is the better option for tax saving or not, right? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट बेसिकली जब कोई भी वन पर्सन, चाहे वो रिलेटिव हो या अदर देन रिलेटिव हो, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन किसी अदर पर्सन को देता है, तो जो पर्सन देता है दिस इज कॉल्ड द डोनर, एंड जिस पर्सन को दिया जाता है दिस इज कॉल्ड द डोनी। तो जो पर्सन किसी भी लव एंड अफेक्शन में, तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो वो देता है, तो दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट और इट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। और गिफ्ट के केस में गिफ्ट जब भी कंप्लीट होता है जब डोनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया हो। तो दिस इज द basic definition of gift, and after this we will understand the taxability of the gift कि कितने अमाउंट तक जो है एक जो गिफ्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, और किन किन ओकेजन्स पर जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल नहीं होता, इवन उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा भी हो जाती है तो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे। देखिए, गिफ्ट जो है एक बहुत ही अच्छा एक टैक्स प्लानिंग का हम ऑप्शन कह सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं किसी को विदाउट विद कंसिडरेशन, तो वहाँ पर अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आपका जो है कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, शेयर्स वगैरह है तो वहाँ पर भी कैपिटल गेन आएगा। बट आप इस जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको गिफ्ट की फॉर्म में देते हैं, तो वहाँ पर जो है आप बहुत अच्छी जो है एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हो विद इन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट? एंड ये इट्स नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इट्स ए गुड ऑप्शन फॉर सेव योर टैक्स ऑन द ट्रांसफरिंग योर इमूवेबल और मूवेबल असेट्स, राइट? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कितने अमाउंट तक जो है गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। तो बेसिकली अगर नॉन रिलेटिव का केस है तो उसके अंदर जो है आपका 50,000 तक, यानी अगर 50,000 या उससे जस्ट 1 रुपया भी ऊपर होता है तो पूरा गिफ्ट का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए जो है आपका अंडर 50,000 जितना भी अमाउंट है वो आपका एग्जम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट? और अब हम देखेंगे कि किन किन असेट्स पर क्या क्या लिमिट जो है टैक्सेबिलिटी की बताई हुई है। अगर आप कोई सम देते हैं, एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, इट्स अप टू 50,000, इट्स नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बट इट्स 50,000 और मोर देन 50,000 एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, राइट? And in addition to that, any immovable property such as land, building, etc. is transferred without consideration as a gift. Its stamp duty value is more than 50,000 or 50,000. Stamp duty value will be the taxable amount, right? After that, any immovable property for inadequate consideration, then in such case stamp duty value exceed consideration by 50,000. So in that case, stamp duty value minus consideration will be the taxable amount, right? Any property, jewelry, shares, drawings, etc. other than immovable property without consideration is transferred. In that case, fair market value is more than 50,000. In that case, entire fair market value of such property will be taxable under the Income Tax Act, right? And any property other than immovable property for consideration, fair market value exceeds consideration by 50,000. In that case, fair market value minus consideration will be taxable.
After that, we will understand in which cases the gift is entirely exempt even if your gift amount is more than 50,000, right? So this case is the case of relative, and various other cases in which your gift amount is even more than 50,000. In that case, the entire gift amount will be exempt, right? First case is individual who are transferring gift under relative, right? In income tax act, the relative definition of the relative has been given to uh, to specify who is relative or who is not relative. First of all, spouse, brother and sister of self, spouse, right? Brother and sister of parents or parents in law, any lineal ancestors or descendants of self or spouse of any of relatives mentioned here. All of these relationships, if any gift made under these relationships, in that case all of the amount is of the gift is exempt, right? Any person has giving any gift to any individual. In case of marriage of individual, in that case whole of the amount of gift is exempt. Any person giving the any gift to any person, right, under a will or by way of inheritance, in that case also the gift amount, entire gift amount or will be exempt. Any person, local authority, panchayat, municipality, municipal committee and district board, cantonment board giving any gift to any person, in that case the entire gift amount will be exempt. Any fund, foundation or university, other educational institution or hospital, other medical institution or any trust institution referred to section 1023C, giving gift to any person, in that case entire amount of gift will be exempt. Any charitable religious trust registered under section 12A or section 12AA, in that case giving gift to any person, in that case entire amount will be exempt. Any HUF giving the gift to the member of HUF, any distribution of capital of total or partition of HUF, in that case also the whole amount of gift is also exempt, right? Any individual giving gift to trust created or established solely for the benefit of relative of individual, in that case the gift amount is also exempt. So these are the cases in which the amount of cases in which the gift are exempt from the perspective of income tax act, right? Thank you very much for thank you very much guys for watching this video. I hope this video is going to be very helpful for you, and if you have a query related to this, so you can contact on the number given on the screen, or if you have a query related to the income tax, GST, import export, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much guys.